Good afternoon, everyone. I welcome you all in this live session with our proud empowered women on the topic Empowering Women through Empowered Women with Miss Aditi Agarwal and Miss Shweta Batra and myself, Dr. Divya Prakash. Aditi Agarwal is a founder and managing director in Adisap System Private Limited. She completed her B.Tech in 2004 in IT. She has total experience of 15 plus years. In past, she has experience of solution architect at Tata Consultancy Services. Actually, beside this, Aditi is the first girl student of SIT. And other than this, she is also my first girl student. So until I will remain in teaching profession, Aditi will remain in my journey and my talks. Actually, today I'm unable to stop myself to share with you that I started my journey with SIT on September 7, 2000. At that time, due to a female candidate, and I was the first one to join SIT, my ideal, Chancellor Sir asked me to start my official work from his home. आफ्टर दैट कब ये ऑफिस ही मेरा घर बन गया पता ही नहीं चला कब मैं इस परिवार का हिस्सा बन गई और कब ये परिवार मेरे जीवन का हिस्सा बन गया एहसास ही नहीं हुआ and today due to Aditi memories are fresh so Aditi I welcome you on behalf of Shobhit University and myself. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you Welcome so beta. much. Thank you so much for this wonderful introduction, ma'am. I'm so obliged. Thank you. So nice of you. So, And the other proud, Aditi, just 1 second. Other proud alumni is Shweta Batra. In my words, I can say a storm of SIT. I remember when she came from corridor, I feel that time a storm is coming. At that time, I only feel that she will prove one day, and she proved me right. So, Meri Andi, Meri Storm, oh my God, Shweta. Shweta is an optimistic and a fun-loving person who graduated from Shobhit University in 2006. Lives by the rule, life is short, so why not smile while you still have teeth? A digital product honored by the profession who has worked across different parts of the globe. Breaking her own limits help her achieve the difficult. She also believes that she harnessed a lot from the society to become who she is today. And it is her personality to give it to the society with her capacity and contribute to the education of 24 kids. From becoming the college ideal to winning the best business analysis of the year and to Mrs. India face of the West, she lives the life on her term. However, enjoying a small joy on the journey, I welcome you also, my pride, Shweta. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, I could Beta. not have imagined of an introduction like that myself. You have worked hard. No match there. Actually, these are the feelings of my heart and the time which I spent with all both of you. Thank you. Thank you so much. So now it is time to start our session, and I am more than 100% sure today both of you will certainly empower today's audience. We will try, ma'am. Yeah. Aditi, first, I think so. We must start with the Aditi. Can you please introduce yourself to the audience? मेरा तो हो गया introduction. अब Ma'am, आपने इतना अच्छा दे दिया कि अभी कुछ बचा नहीं, but still आप कह रहे हैं तो I'll speak something. Yeah. First of all, I am really grateful to you कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इस platform पे. It's such a big platform for me because I started my career, my journey from here itself. So thank you, ma'am. Basically, I belong to Jhansi. सबको पता है Jhansi is a land for empowered women, Maharani Lakshmi Bai. So I am. Exactly. So you are. और शायद यही मेरा नाम था कॉलेज में झांसी की रानी झांसी वाली मुझे इसी नाम से बुलाया जाता था सब झांसी की रानी जगह शोभित आई नो दिस सब मुझे और बच्चे मेरी एक्टिंग भी करते थे घोड़ा लेके टिक 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 ऐसे वाली मेरी नकल उतारा करते थे आ गई झांसी की रानी और टिक 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 चालू हो जाता एंड so I have done my schooling from Jhansi and then I have done my engineering from Shobhit University Gangoh. And then after Shobhit, I joined TCS and I worked there for almost 10 years with very prestigious projects of Government of India like Passport Seva, Delhi Excise,
income tax of India, etc. All were government projects. So I was really lucky to serve the government domain there. मैंने सारे सरकारी projects पे काम किए and I have served government of India there. Yeah. After TCS, I started my own venture, and now I'm working as a managing director in Adisap Systems Private Limited. Apart from this, I am a university topper, and I have received scholarship from Prime Minister of India at that time, Mr. Atal Bihari Vajpayee ji, through Adarsh Scholarship Scheme, again, which is sponsored by Shobhit University. So I'm glad for. Aditi, just meant your photo is in our admission cell with Agarwal Bajpayee. Oh my God! Thank you, ma'am. Yeah, I'll love to see that pic again. yeah, I can share. Yeah. Sure, ma'am. I'm privileged. Yeah. And apart from this, I am a national level badminton player, and I still play. At this age, I am still playing the tournaments and participating in national tournaments. I am a religious person also who loves to read Sundarkand and other religious involved in other religious activities. So I think that's it from my side. Wow, Aditi. I also love to read Sundarkand. Wow, Really. ma'am, same interest. Yeah. Thank you, Aditi, for introducing yourself. Now, Shweta, can you introduce yourself? Absolutely, ma'am. First of all, ma'am, thank you so much for inviting me onto this platform. I'm so it's an immense pleasure to share this platform with you and Aditi, ma'am. A huge pleasure here. So, and as you said about me, like smile till I have teeth, I have to let you know that they're having a lot of dentist visits to keep the smile this way. Oh, wow. So there is a big hand where the dentists play in a role for that. But yeah, as far as to introduce myself, yes, I am one of the graduates from Shobhit University, graduated in instrumentation back in 2006, an amazing journey there. After that, as Aditi ma'am said, I also started my career with one of the IT giants here in Infosys, where I got the exposure to work with global clients situated in US, UK, Canada. From there on, I headed towards Australia. Right now, I'm working into the digital transformation space as a product owner with Australia's biggest bank, Commonwealth Bank Australia. And I am now settled in Sydney. And also, I'm just surprised to learn right now that ma'am plays badminton at national level. I used to play till district level. Yeah, I didn't get a chance to play at nationals though, but was a district level player for badminton. So same interest there. Great. Wow, that's good. Yeah. Thank you, Shweta. Now, I think so. I must ask something about that. What is your views about the women empowerment? Aditi, can you tell us? And your views, what is the woman empowerment? Yes, ma'am. Actually, women empowerment is अभी हमने बहुत ज़्यादा सुन लिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट ये और वो, और कई जगह उसको फेमिनिज्म से भी कंफ्यूज किया जा रहा है, और इट्स कई जगह रॉन्ग वे में भी यूज किया जा रहा है. बट एज पर मी इट्स एक्चुअली यू. It starts from you, from inside. A strong woman is already empowered. ये आपके बचपन से ही शुरू हो जाता है empowerment. अगर if you are strong, you are empowered, and it's an ability of a woman to lead her life in her own terms. But yes, in this journey, support of women, of one woman to another, plays an important role. और women empowerment हमारे यहाँ picture में क्यों आया? Because earlier women were not treated equally like men. It was like कि they have to take care of their family, they have to take care of their kids, so they were not getting equal opportunities. So there is a need for a change in society, because of which women empowerment came in picture. So it could be in the form of a political empowerment or an economical empowerment. Exactly. Shweta, can you enlighten us? Yeah, so I totally agree to Aditi ma'am that it starts from you and there have been challenges. But I am more of concerned, right, why there is such a pressing need to bring up this issue at such a great scale, like women empowerment. Really, why are we talking about it so much? Many of the veterans, lately we've lost such a huge veteran, Justice Batra.
So she was playing a great role towards gender equality. She was the ambassador for gender equality. So we lost. So there have been veterans who are losing their lives working towards this cause. So that's a surprise, right? So, ma'am, when you invited me to this platform, actually, I Yeah. took the opportunity to go and connect with few of my female colleagues, my friends, and all from different ethnicities to understand what women empowerment means to them. And I was absolutely surprised what media enforces onto us. The ground reality is absolutely different to that. So the society went wrong, that's my view. So the society went wrong in emphasizing the view that somebody who has been in the leadership position, who has been a CXO, an entrepreneur, who earns a lot of money is a successful, empowered woman. Whereas at the ground level, what women want is they just need to believe in themselves. What they need is to stand up for themselves. And what they need is happiness and peace at heart. That's what I've learned. So here is what the difference is. So for me, women empowerment is having a belief in myself and having the courage to stand up, raise my voice, make sure I like back up my opinion with facts and everything. So it is the ability, the courage to come up and raise my, like, present my opinion and have a belief in myself. So that is what I think is women empowerment. And I Full can empowerment. and absolutely cannot emphasize on this fact that women empowerment must not be mistaken by minting money, because happiness or empowerment can be driven from being at peace at heart or being in the leadership position. So please do not mistake it. And that's my opinion, and that's what I said. Having the opinion is what is empowerment. So please don't hate me for that. That's my Yeah. opinion. Yeah, Shita, agreed. Shita, I memorized that when I was kid, my mother told me every time, Napoleon said, "Give me educated mother, I shall promise you to the birth of a civilized and the educated nation." This is the best example of woman Oh, empowerment from my side. Absolutely. yes, ma'am. Absolutely. This Ma'am, is Yeah. so you different. yourself are, ma'am, We you just, are yourself are an example for us. You are an Yeah. empowered woman for yeah, us. absolutely. Exactly. Exactly. We can empower the nation. Yeah, absolutely. Yeah, so now again, my next question rise: what challenges as a woman you had to face in your life, and what motivated you to keep moving forward? Aditi, I think so first, as you are a senior of Shweta. So Thank Yes, you, yes. I'm ma'am. That's okay, मैम. Actually, challenges तो मैम मेरे साथ ना अदिति के साथ challenges लगे रहे हैं शुरू से from my childhood, and since my childhood I decided to be an independent person, an independent empowered woman. I never liked the idea of women ki they are dependent on men for their daily needs and everything. So from my childhood I have entered the men's space to create my own way. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्कूल, जब मैं स्कूल में थी तो एक स्कूल में हमारे बहुत बड़ी सी फील्ड होती थी, तो उसमें ओनली बॉयज यूज टू प्ले. तो आई वाज लाइक कि बॉयज ही खेल रहे हैं, तो आई वेंट टू दैट फील्ड. मैं एक दिन चली गई अपनी एक फ्रेंड के साथ वहाँ स्कूल में, उस फील्ड के अंदर, एंड वहाँ पे बॉयज ने कहना शुरू कर दिया कि ये फील्ड तो सिर्फ बॉयज के लिए है, गर्ल्स आर नॉट अलाउड हियर और ये और वो. मुझे लगा ये क्या है. आई वेंट टू माई मैम, मैं अपनी मैम के पास गई और मैंने उनको बोला कि गर्ल्स क्यों नहीं अलाउड है इस फील्ड में. तो मैम ने कहा ऐसा किसने कहा तुमसे, गर्ल्स आर अलाउड. और स्कूल में एक अनाउंसमेंट की गई कि गर्ल्स आर अलाउड इन द फील्ड और ये खेल सकती है यहाँ पर जाके, नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप देम. और फ्रॉम दैट डे कि सारे के सारे मतलब बॉयज एंड गर्ल्स सारे के सारे उस फील्ड में साथ में खेलने लगे. wow. ये एक स्कूल का मैम छोटा सा किस्सा है, बट यहाँ पर मतलब ऑब्वियसली देयर वाज अ डिफरेंस, जेंडर गैप, बॉयज अलाउ नहीं कर रहे थे, बट आई मेड अ करेज देयर कि मैं मेंस के स्पेस में गई. सिमिलरली जब मैं ऑफिस में थी, व्हेन आई वाज इन टीसीएस एंड अदर कंपनीज आल्सो, सो आई डोंट से देयर वाज अ मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं था, बट एज अ फीमेल मेरे पास challenges थे. As a female, मेरे it was difficult for me to compete with my male counterpart because मेरे पास एक family है, I have a husband, I have kids to manage, and
मेल काउंटर पार्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने जॉब पे फोकस कर सकते हैं, दे आर नॉट इन टू देयर किचन बिजनेस, फैमिली बिजनेस, तो इट वॉज Exactly. टफ, बट आई स्टिल कंटिन्यूड। मतलब हमेशा ये हो रहा है कि आप ऑफिस में जितना मेल दे सकते हैं उतना टाइम आप नहीं दे सकते एज अ फीमेल, बिकॉज आपको फैमिली भी देखनी है, अदरवाइज दैट विल आपको सफर। समझ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो वहाँ पे सफर करती थी चीजें, बट स्टिल आई कंटिन्यूड माई जॉब कि नहीं, आई विल नॉट लीव माई जॉब, जैसा भी है आई एक्सेप्ट दिस एज अ चैलेंज फॉर मी कि मुझे दोनों चीजें बैलेंस करनी है, बट आई वोंट गो बैक। इसी तरह से मतलब व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी, तो आफ्टर जस्ट 15 days आई केम टू नो दैट आई हैव टू बी ऑन बेड रेस्ट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग। तो बट आई ऑलरेडी स्टार्टेड विद द टीम, तो सबने मुझे कहा कि तुम कंपनी बंद कर दो अभी क्योंकि तुम्हें बेड रेस्ट पे रहना है, हाउ विल यू मैनेज। आई सेड कि नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया है तो अब मैं बैक नहीं जाऊंगी, आई विल कंटिन्यू विद दिस कंपनी। मैम, मैंने घर से काम किया है, बेड पर लेट कर, लैपटॉप को मैं लेटे लेटे चलाती थी। 8 months मैंने लेट के बेड से काम किया है विद माई टीम, बट आई डिडंट स्टॉप, आई डिडंट हैट्स ऑफ। क्लोज कंपनी। और जब मेरी डिलीवरी हो गई, सी सेक्शन से हुई थी मेरी डिलीवरी, विद इन 3 days ऑफ माई सी सेक्शन मैं अपनी टीम के साथ दोबारा ऑफिस में बैठी थी टू वर्क। वाह, So ग्रेट। challenges are there, but I never gave up to them. I continued my journey. Ki I have to follow my dreams, my inner thoughts, and I will never give up. अदिति, तुमने अपनी एक स्टोरी सुनाई तो मुझे भी एक छोटी सी बात याद आ गई अपनी, है ना। व्हेन आई कंप्लीटेड माय 8th स्टैंडर्ड फ्रॉम गंगो, यू नो बेटर गंगो, है ना, बोथ ऑफ यू नो द गंगो, है ना। बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, they were well known about the science stream as well as, but there was a challenge in front of them as there's no science education for the girls students in Gangoh. It was only for the boys, and that is the only one college, HR Inter College. But my parents accepted this challenge. Especially, my father took a decision of my admission in HR Inter College. And at that time, maybe audience may know about the HR Inter College of that time. There was nearby 9,000 boys in first year, and I was the only girl to take admission in that college. So I'm not going to tell you what are the problem we faced, but we accept it, this challenge. My parents accepted this challenge and we proved this. So by the help of your session, I want to pay my heartfelt thanks to my father, my mother, my brother, and after marriage, I can say my husband. So I was thinking that I must add some story of my journey also. Now the turn is ball in the Shweta. Shweta, can you tell me about the challenges of your life? Absolutely, ma'am. So such inspiring stories from Aditi ma'am and yourself. Like, I cannot even dream of having put in such a big fight and pursue it, because I had been lucky in the sense, I would say, I had parents who had no discrimination between me and my siblings. But Yeah. yes, what can I say? There is nothing more powerful than a woman who's decided to rise, and that's what we can see in both of you. So I would say my journey has been a little different from Aditi ma'am's, and I was really lucky that my parents had never discriminated between me or my sibling, like my brother and my sister. We were raised in the same environment, went to the same school, same education, same food for thought, same food for tummy as well, same values and same belief system. So basically, we were provided everything at the same level. There wasn't any difference to it. But when this first hit me hard was the time when my father was diagnosed with a life-threatening disease. At that very time, some of the well-wishers, so you may call them, came up to my parents and advised them that marry your daughters because you have to raise a boy. He needs to be educated and to be made capable enough to earn a living. So it'll be good if they'll be married and you'll have just one child to take care of. But again, I would say, and I know of this incident because I'm very close to my mother and she shares everything with me. So, but I would say I was lucky that my parents were so supportive that they just ignored the well-wishers' suggestions. And here I am, I graduated
in engineering and then pursued a career in IT. So that was for the first time I realized you need to have belief in yourself that you can do something. And I also remember one of the second incidents that just registered in my mind. That was when I entered university. I happened to have my own views and my own belief system. As you said, ma'am, the storm is coming, Andy. So I was very vocal about that. And I was very, yeah, I had my own opinions from the very starting. So I used to be very vocal, very clear in putting across my point, have been to the director's office to let them know what's there in the system that can be improved, things like that. And that very moment, everybody in the college knew who Shweta Batra was. So the second thing that I realized in the life was you need to have the courage to put across your point supported by facts. So those are the two rules I still believe in that every woman must carry to be empowered. So I wouldn't say like challenge. Challenges were not from inside, but the challenges were brought on to me from the outside world. So society is not treating all the genders equally. So yeah, have self-belief and have the courage. Wow. What do I say? Wow. Good to hear your stories, Shweta and Aditi. I think so. Now, the next, I want to ask one thing. What we as a woman can do to help other women break the barriers and empower themselves? Because this is the topic, empowering the woman through empowered women. Aditi, can you tell us? Actually, to empower a woman, actually हमें उनको help करना चाहिए to that a woman should know their strength, inner strength and capabilities, what she is capable of, what she can do. हमें उनको equal opportunities provide करनी चाहिए and उनको बताना चाहिए कि what is their real potential, what they can do in the life. They should come out with the flying colors. Like we are three sisters and I am the eldest one. So my family wants me to get married instead of going for engineering. But I continued my studies against all odds, and it was hard for me to get the coaching for engineering because my father was not ready. तो मेरे पापा ने मना कर दिया था कि गर्ल्स इंजीनियरिंग नहीं करती है, लड़कियां इंजीनियरिंग में नहीं जाती हैं, तो समथिंग लाइक दैट, और उसके लिए मुझे कोचिंग भी चाहिए थी. तो आई टॉक टू माई टीचर्स एंड उन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा, और वो टीचर्स जो अपने यहाँ बिना फीस के एंट्री भी नहीं करने देते, यू वोंट बिलीव, उन्होंने मुझे 1 साल फ्री कोचिंग दी है. आई विल नेम दो टीचर्स, मनीष जैन सर एंड नीरज खत्री सर. उन्होंने मुझसे कोई फीस नहीं ली है, एंड आई वाज सो लकी टू हैव देम. और वंस आई वाज सिलेक्टेड फॉर इंजीनियरिंग and I took admission, my father is the most supportive and happiest person in the world. He supported me. He was like very happy for me, and due to all that support and coordination, मैं अपनी family में पहली engineer हूँ. I'm the first one who broke the barriers and went out to stay in another city for education. और इससे हर जगह फर्स्ट है. Yes मैम, मैं घर में बड़ी हूँ ना. और यहाँ फर्स्ट स्टूडेंट, मेरी फर्स्ट स्टूडेंट, एसआईटी की फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट का टैग है अदिति के साथ. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और सर इससे क्या हुआ कि जो बैरियर था, वुमेन बैरियर, मेरी फैमिली में आई ब्रेक दैट बैरियर. उसके बाद मेरी सिस्टर्स जो भी थे, छोटे भाई बहन, किसी को कभी कोई इस तरह के चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, बिकॉज मैंने उनके लिए एक पाथ ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था. आई हैव ऑलरेडी एम्पावर्ड ऑल द वुमेन इन माय सोसाइटी, इन माय फैमिली आई शुड से, कि seeing me, my parents and every relatives were also impressed. तो उन्होंने भी शायद अपनी बेटियों को कभी फिर हमेशा अलाउ किया और आगे बढ़ाया. Good. Yeah. What are your views? Well, I have like some of my views may vary again. So to empower other women, I think it's a threefold process. That's my view. Okay. The first is we really need to stop doing this positive discrimination by emphasizing on this issue: women empowerment, women of equal opportunities. So by doing this, we are just having a positive discrimination. And it is leading to an obvious discrimination with time.
So the first is just stop doing that. Talk about the empowerment as a whole. Talk about human empowerment. Talk about empowering everyone. And women are a part of human race, are a part of everyone, so they are automatically covered. Just stop doing that. That's the first thing we all need to do for sure. Second thing, we as women are actually creating barriers for each other, right? Forget about the men in the world outside. We are the ones who are stopping other women. Let me bring up a very small example. And I bet everybody, all the audience who are there, if they have been in the corporate world, have your hand on your heart and tell me if I'm saying wrong, right? So every time we see a successful woman, when I say successful, one who is doing really well in their career, we just say super mean things to them. We just are crabs. We try to pull the other women down, right? Yes, We don't exactly. हाँ, बिल्कुल. say that. So, and I am very sure everybody must have come across similar incidents. I'm saying that because I myself have come across it, and I'm not saying I was like very pure at heart and haven't done that. But over the period of time, I have realized that that's what we need to do. Be supportive and stop being crab. Do not actually bitch about the successful women out there. Support them, grow with them. So this is the second process, right? The second fold I was talking about. We need to have a sisterhood. Do not drag each other down. The third one comes wherein we need to have everything, as in we need to know ourselves. Like when I say know ourselves, we should be very clear on what our dreams are, what our aspirations are, what we want out of the life. We should nourish ourselves with great thoughts. We should surround ourselves with people who are empowering as opposed to ones who are dragging us down. And also, after we have enriched ourselves with everything, we should be able to give that back to the society. Be it brothers, be it sisters, be it friends. Pass on what you have to everyone around. That is what is true empowerment. But just empowering women is not going to solve the problem on this planet. So, as I said, threefold process start from us and just vibrates across to the whole world. Yeah. Our, Agreed, Shweta and Aditi. अदिति श्वेता बीच में एक बात बताती हूँ मैं. When जब 2000 में अदिति यहाँ थी तो at that time कुछ नहीं था यहाँ पे. अदिति तुमको याद होगा गर्ल्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती थी. अदिति याद है आपको? Yes, ma'am. हाँ, तो at that time मैं स्ट्रीट चलाती थी. याद है? याद है आपकी? हाँ, गंगों में कोई नहीं चलाता था. तो एवरीबडी ma'am. मुझे जो था गेज करता था. मैं अपने फादर से बताती थी जाके कि पापा जब मैं जाती हूँ तो लोग गेज करते हैं. तो पापा ने कहा इसको एक चैलेंज लो. तुम एग्जाम्पल सेट कर रही हो लोगों के लिए. यू आर क्रिएटिंग एन एग्जाम्पल फॉर एवरी गर्ल जो अब तुम्हारे बाद आना है. अब मैं देखती हूँ लोगों को, लोग आराम से चलाते हैं तो लोगों की मेंटलिटी चेंज होने लगी है. एट द सेम टाइम मैं एक बार आ रही थी तो किसी ने मुझे कुछ कहा तो मुझे जो कहा उससे प्रॉब्लम नहीं है. जो लेडीज साथ में आई उन्हें पूछा क्या कहा, क्यों कहा. तो मेरी सबसे ये बात है कि एटलीस्ट आप कुछ कर नहीं सकते वुमेन के लिए तो डोंट क्रिटिसाइज. वुमेन को क्रिटिसाइज ना करें, है ना. अगर आप देख रहे हैं कहीं पर तो आप एटलीस्ट उसकी पावर बनो, उसको क्रिटिसाइज मत करो. डोंट क्रिटिसाइज. वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है तो उसकी पावर बनो, उसको लैक डाउन मत करो, उसकी लैक पुलिंग. Absolutely, ma'am. Ma'am, I just brought up an example, मतलब सिर्फ corporate world में, but as you rightly said, ये normal life में भी है. Outside corporate world also, if any girl who's trying to live by the rules that she wants and also not harming anyone, not causing any harm to the society, but still जैसे आप बोल रहे हो, there will be people जो आके they'll pull her down, not support her. So very true. And that is what I think is so super required for us to support each other. I just cannot emphasize more.
चलिए, move to our discussion. Aditi, why you choose to be part of SIT? Is there any reason behind that? मैम देयर इज अ बिग स्टोरी बिहाइंड दिस व्हिच आई नेवर टोल्ड यू गाइस. मैंने अभी तक कभी कॉलेज में ज़्यादा बताया ही नहीं है, बट देयर वाज अ बिग अच्छा, स्टोरी बिहाइंड दिस. यस मैम. तो अगर oh, आप कहें तो आई विल टेल यू, अदरवाइज. yeah, sure, 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 Aditi. Uh, बताओ please. मजा व्हेन आएगा. आई वाज अ चाइल्ड, मेरे को कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो आई वाज ऑलवेज कि मेरे को कंप्यूटर्स ही पढ़ना है, कंप्यूटर्स में मैं लगी रहती थी. 11th क्लास में सारी लड़कियों ने कंप्यूटर्स छोड़ दिया और मैथ्स भी छोड़ दी. मैंने कहा नहीं, मेरे लिए तो चैलेंज है. अगर टफ भी है तो भी आई विल स्टडी कंप्यूटर साइंस ऑल्सो और मैथ्स ऑल्सो. तो मैंने दोनों चीज़ें ली. लड़कियों ने सबने आर्ट्स और बायोलॉजी ले लिया था, बट मैंने नहीं लिया. फिर Oh, मैंने इन्हीं से अपना ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास किया. कंप्यूटर साइंस में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे और कंप्यूटर्स और मैथ्स में किया. उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करके काउंसलिंग के लिए गई, तो वहाँ पर देयर वर वेरी फ्यू सीट्स इन आईटी ब्रांच लेफ्ट. तो मेरे को था कि मेरे को आई वाज सो इंटरेस्टेड इन आईटी कि मुझे आईटी ब्रांच ही चाहिए, तो मैं यही हाँ, लूँगी. एंड दे वर फिलिंग वेरी फास्ट. और वहाँ पे तब एक फंडा होता था पेड और फ्री सीट का, और मैं आई वाज नॉट फाइनेंशियली सो वेल कि मैं पेड सीट अफोर्ड कर पाऊँ. तो मुझे ये था कि अगर मुझे फ्री सीट मिल जाती है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है. तो फर्स्ट डे हम गए, कोई सीट अवेलेबल ही नहीं थी. तो मेरे पापा ने कहा कि चलो वापस चलते हैं, अभी तो सीट है नहीं. तो मैंने कहा हाँ चल तो सकते हैं, लेकिन लेट मी ट्राई. मैं काउंसलिंग देख के जाऊंगी पूरी. 2 दिन की काउंसलिंग होती है, जब वो पूरी होगी तब मैं जाऊंगी. तो मैंने काउंसलिंग का फॉर्म वॉर्म सब भर दिया. मेरे पापा इधर उधर बैठे रहे, लोगों से बात करते रहे. फिर जब शाम को 5 बजे 4 बजे तक कोई सीट नहीं थी, सडनली दिस कॉलेज पॉप्ड आउट. शोभित शोभित मेरठ एंड शोभित गंगो. 103, सेंटर कोड 103. यस मैम. वो आई वाज लाइक कि अरे मेरी तो काउंसलिंग कल मॉर्निंग में ही है और अभी की काउंसलिंग खत्म होने वाली है, तो आई हैव फुल चांसेस कि मुझे ये सीट्स मिल जाएंगी. Oh, फिर भी फिर रात का हमारे पास टाइम था. उस दिन की काउंसलिंग खत्म हो गई, हम घर गए. और पापा ने कहा कि तुम अब इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो, तुम्हें जो कॉलेज मिल रहा है, तुमने जो ब्रांच लेनी है ले लो. पहले वो बिल्कुल अपोज कर रहे थे, और वहां जाके उन्होंने जब देखा काउंसलिंग का माहौल, तो वो बिल्कुल चेंज हो गए कि अब तुम अरे कुछ भी वाह. ले लो, तुम इंजीनियरिंग करो बस. और हाँ, मैं वाह. नेक्स्ट, मतलब वो इतना हो गया कि चलो केमिकल ले लो, मैकेनिकल ले लो. मैंने कहा नहीं, मुझे कंप्यूटर्स में ही करनी है. तो Okay. फिर नेक्स्ट डे हम काउंसलिंग के लिए आए, तो सिर्फ 3-4 सीट्स थी, लेकिन मेरा नंबर काफ़ी शुरू में ही था काउंसलिंग के लिए. तो मैंने लेकिन अपने पापा से बोला कि मेरे को शायद मिलेगी नहीं, तो आप रिफंड वाली लाइन में लग जाओ, मैं वापस आ रही हूँ बस काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग से बैकआउट करके. फिर मैं काउंसलिंग के लिए गई ऊपर. तो वहाँ पर एक बंदा तो प्रेयर कर रहा था कि मुझे इस कॉलेज की ये सीट मिल जाए. मैंने उसको देखा, मैंने कहा मुझे तो शायद मिल ही जाएगी, तो मैं क्यों छोड़ रही हूँ. मैं काउंसलर के पास गई, तो वहाँ पे 2-2 लोगों को साथ में जाना होता है. उसने भी अच्छा. सेम सीट मांगी, मैंने भी सेम सीट मांगी, और मुझे अलॉट हो गई पहले, उसको नहीं हुई. और और वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई बकायदा यूपीटीयू काउंसलिंग में कि लास्ट फ्री सीट ऑफ यूपी टेक्निकल काउंसलिंग हैज बीन अडॉप्टेड बाय अदिति अग्रवाल, और ऐसे करके. तो आई वाज सो लकी टू गेट द एडमिशन इन माय फेवरेट ब्रांच जो मुझे चाहिए थी. एंड मैं, और वहाँ पे ना तब अनाउंसमेंट होती थी, तो मेरे पापा बैंक रिफंड लाइन में लगे हुए थे, और उन्होंने अनाउंसमेंट सुना, तो वो कहने लगे कि मुझे बोल के गई थी कि रिफंड दो, और वहाँ तो इसने सीट भी ले ली. अरे वाह, दैट्स गुड. अच्छा लग रहा है अदिति सुनना ना सारी चीजें, क्योंकि ये सारा पार्ट्स अभी हम लोग का रह गया था. इतने दिनों के बाद तुमसे बातें सुनना, तुम्हारी बातों के बारे में जानना, रियली गुड. मतलब वही मैं कह रही हूँ ना मैम, मेरे लिए हर जगह चैलेंजिंग भी रहा है, और मेरे पास बहुत सारी हाँ, स्टोरीज भी बन गई है उसकी वजह से, सुनाने के लिए, बताने के एक्चुअली लिए. अदिति मुझे लगता है जब आप होते हो, सक्सेसफुल होते हो, तो आपकी स्टोरीज अपने आप बन जाती हैं. आप कुछ कर नहीं सकते. इतने सारे चैलेंजेस आप लेके आते हो लाइफ से. हर हर जगह आपको मोमेंट पे आपके पास कोई ना कुछ क्लिक करता है, तो देन इट विल क्रिएट ए स्टोरी. Absolutely. Yeah. Exactly. Aditi, the next I want to ask, what the role has society played in your journey? As you are a successful woman today, I'm watching, and a lot of audience in the comment box जो है वो भरा जा रहा है. Wow, ma'am. Thank you, So audience. Thank you so much. yeah. Yes, ma'am. So Aditi, can you tell me what the role you as society played in your journey? यस मैम, ऑब्वियसली एसआईटी तो मेरे लिए एक लाइफ चेंजर है, और लेसन्स फॉर लाइफ मुझे यहीं से मिले हैं. क्योंकि बिफोर शोभित मैं क्या थी, आई वाज अ स्कूल गर्ल जो कि अपने पेरेंट्स के कंफर्ट जोन में घर में रहती थी. कोई चैलेंजेस आए तो मम्मी पापा को आगे कर दिया, पापा आप देख लो, आगे कर मम्मी दिया. आप देख लो,
है ना, हर चीज में मम्मी पापा। लेकिन जब यहाँ पर आए तो फील हुआ कि नहीं, वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट। दुनिया अलग होती है, मम्मी पापा के साथ दुनिया अलग होती है, और जब आप चीजों को फेस करते हो तो चीजें अलग होती है। बट आई एम सो लकी यहाँ पर भी आकर कि मेरे को दिव्या मैम मिली, अनामिका मैम, शेखर सर, सो मेनी गुड मेंटर्स जिन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटर किया कि आई एम, जो चैलेंजेस आई वाज देयर विद चैलेंजेस, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं शोबित में, बट आई एम लकी कि मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले यहाँ पर आकर, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी आगे बढ़ने में। मेरे को डिफरेंस समझ में आया कि रियल लाइफ सिनेरियो में और एक्चुअल जो आप घर में कंफर्ट जोन में होते हो उसमें डिफरेंस क्या है, और उसके लिए हाउ टू डील विद दो सिचुएशंस। तो आई थिंक वो जो चैलेंजेस मैंने यहाँ पर फेस करे, और जो भी, और जो मेरे को अच्छे और बुरे लोगों की पहचान हुई शोबित में आके, दैट इज दैट इज अ लेसन फॉर माई लाइफ। और वो मुझे अभी तक हेल्प करती है आगे जाने में, ग्रो करने में, लोगों को पहचानने में, चीज़ों को रिएक्ट करने में। तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट चेंज इन माई लाइफ। This is a platform. यस मैम, फाउंडेशन चेंज कह सकते हैं, Yeah. दैट फाउंडेड माई लाइफ। Ah, Oh, wow. that's great. That's awesome. So great. Nice. Shweta, can you tell me, yeah, and my audience, that what role has society played in your journey? Wow. Everybody's got such a beautiful journey. I would like to definitely contribute, like tell what has SIT played a role in my life. I would say it's been really instrumental in my life and forming the women I am today. If we consider education, then education is something that you get in each and every institute. It could be just different levels, but you get educated. So that's definitely there. That has helped me learn a lot. That has helped me in my academics, helped me get a job and everything. But the other things, those small little things that we ignore and that I have learned from Shobhit University is what I would really like to bring it up. So in my college days, I was staying in hostel and there was a curfew after 9. So we were like literally locked behind the bars after 9 p.m. We are not supposed to have Safety. a step out. Safety. Absolutely. In hostel, like not a step out of the hostel door. Yeah. We were locked up. We used to just script, but we're not allowed to step out. Not only this, there were other scenarios like there was no food, no breakfast served after 8 a.m. So either you have breakfast or starve throughout the day. So that was like really, and in this world where we speak about freedom of speech, mobile phones were banned. Today, a 10-year-old kid can play around with mobile, and mobile phones were banned. So why I'm like highlighting these things? These are very small, but what they have taught me. 9 baje ka curfew actually told me. Actually, I would not say told me. Actually, inculcated a sense of discipline in me. How important it is to have discipline in life, doing things at the right time. So at that time, I was like, curfew lag gaya, curfew lag gaya. But today, it's like, okay, 9 p.m., a discipline in your life. And then talking about 8 a.m. and not having breakfast after that and starving the entire day and attending lectures, not hearing anything, taught me the importance of food at the right time. Because when you have right food, your brain works really well. So that also helped me have a structure in my life. And Exactly. lastly, mobile. I think that all the audience right now, you and me as well, we are so addicted to mobile phones. They were banned back then. But still, we learned how to enjoy that small moments in life, to be happy at heart, be peaceful at heart, even though without technology in the hand. So these are the small things, having discipline, being able to Discipline. enjoy the life, being able to sit alone and still enjoy the environment, the atmosphere around, and also appreciating the food that we receive. So all these small things, apart from the education, is what has helped me craft the woman I am today. So I still actually continue with all those values today. Try to have a routine in life and try to do everything in Yeah. time. That
definitely. Shweta, yesterday I was remembering your grey color suit. Oh, yeah. You still remember Yeah, that? still I remember. And at the time you discussed, no, no, this is a grey color. No, this is not a grey. No, this is a grey. I know. See, I had been really vocal always. And that's what I've been telling about. Yeah, I was thinking that I will share this memory with you that you are discussing with us that this is no, no, ma'am, this is a grey color. Yeah. And you guys were going, no, it's not No, gray. Shweta. it's Yeah, not grey. it's not gray. Definitely not. But see, I Uh, believe I have my own belief system and I will always stick to it. yeah, so nice. I am happy to learn, but for my growth and empowerment, it is equally important to learn from the surrounding. Learn from people who are doing really good in their life. So our belief system should not be actually like we are shutting our eyes and closing our ears and not listening to the good that is happening around. It is equally important to absorb that and actually reflect it in your day-to-day behavior as well. Yeah. So yeah. Ah, Shweta and Aditi, now I come again on my discussion. Aditi, is there any message to the girls student of SIT or Shobhit University from your side? यस मैम ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम शोभित यूनिवर्सिटी और मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी, बी स्ट्रॉन्ग, फॉलो योर ड्रीम्स एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप ठीक हो तो गो अहेड। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात Fair आपको लाने में लग जाती है। तो ये ट्रू है, मेरे साथ ये हुआ है कई बार। जैसे जब मैंने बैडमिंटन खेलने का डिसाइड किया तो देन ऑल्सो माय फैमिली वाज लाइक कि नहीं, लड़कियां बाहर जाके बैडमिंटन नहीं खेलेंगी, बाहर खेलने नहीं जाएंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो खेलना है, आई विल गो। मुझे तो नहीं है। मैं पापा से छुप छुप के खेलने जाती थी बैडमिंटन। तो एक बार क्या हुआ कि माय डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट वाज गोइंग ऑन, मेरा टूर्नामेंट चल रहा था, तो मैं 11 बजे तक रात को घर नहीं पहुंची और सुबह सुबह थोड़ी सी पापा से हो गया था कि क्यों जा रही हो। मैंने कहा मैं तो जाऊंगी। तो अच्छा। फिर 11 बज गया तो पापा को लगा कि शायद बोल के गई है तो आई क्यों नहीं, अब तक गुस्सा तो नहीं हो गई। पापा मुझे ढूंढते हुए स्टेडियम में आए कि कहाँ है, मतलब अब तक घर क्यों नहीं आई। और उस टाइम पे मेरा मैच चल रहा था, फाइनल मैच, और डिस्ट्रिक्ट का मैं फाइनल्स पहुंच चुकी थी उस दिन। और उस ऑडियंस में देयर वर सो बिग पीपल लाइक डीएम, कमिश्नर, सिटी मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा, सब लोग बैठे हुए थे एंड दे ऑल वर चीयरिंग फॉर मी। वो मेरी साइड थे और मुझे चीयर कर रहे थे। Ah, wow. ने जब आए अंदर तो सब लोग पापा को, पहले तो सबको पता लगा कि अदिति के पापा है, और उनको शायद पता भी, सबको ये भी पता था कि थोड़ा सा पापा से होके आई है, ये लड़की आई है। तो, तो सारे लोग पापा को पहले तो बाहर रिसीव करने के लिए गए। पापा बड़े खुश हो गए। फिर अंदर आए तो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा, तो आई वॉज प्लेइंग सो प्रोफेशनली कि सब, माई फादर वॉज सरप्राइज। पापा को लगता था कि मैं बस टुक टुक मारती होंगी, बट जब उन्होंने मुझे प्रोफेशनली खेलते हुए देखा एंड जो क्राउड मुझे चीयर कर रही थी वो देख के ही वो सरप्राइज टू सी द लेवल। तो उसके बाद आई वॉन दैट मैच एंड बिकेम डिस्ट्रिक्ट चैंपियन एट दैट डे ओनली। तो पापा वाज लकी फॉर मी आल्सो इन द कोर्ट। और उसके बाद एवरीबडी केम एंड कांग्रेचुलेटेड मी, इंक्लूडिंग एवरीवन जो भी ऑडियंस थी वहाँ पर। तो उसके बाद माय फादर चेंज्ड हिज माइंड एंड ही नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम प्लेइंग। उसके बाद ही ऑलवेज अलाउड मी कि तुम, और मैं नहीं जाती थी कभी तो वो कहते थे तुम आज स्टेडियम क्यों नहीं गई। तो थिंग्स चेंज लाइक दैट। तो मैं यही कहूँगी कि फॉलो योर ड्रीम्स, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप ठीक हो, मुझे खेलना ही तो था, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझे पढ़ना है तो मैं क्या गलत कर रही हूँ, है ना। तो आपको अगर लग रहा है आप सही हो तो अपने लिए स्टैंड लो। आपको कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे, मेरे सर ने मुझे फ्री में पढ़ाया, मेरे पास बैडमिंटन की किट्स के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैं जो टूर्नामेंट्स जीतती थी उसके प्राइज मनी से मैं खरीद लेती थी। मुझे कहीं ना कहीं से गॉड वाज हेल्पिंग मी। तो वही ना, पूरी कायनात आपको चीजों से मिलाने में लग जाती है। तो मेरे साथ तो वो हुआ है, वो ट्रू है। मैंने जो चीज चाहिए है, अगर मैंने उस पर एफर्ट मारा है तो वो मुझे चीजें मिली हैं। तो मैं सारी गर्ल स्टूडेंट सबसे यही कहूंगी कि फॉलो योर ड्रीम्स, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक हो, गो अहेड, सब कुछ होगा, डरने की जरूरत नहीं है। अदिति, ऐसी जैसे सेम तुम्हारी स्टोरी है, मेरा नाम सबको पता है, डॉक्टर दिव्या प्रकाश। और प्रकाश इज नॉट माई कास्ट, नहीं है मेरी कोई कास्ट। इसकी एक प्रकाश मेरा फादर का नेम है।
मेरे फादर का नाम जो है वो है श्री जय प्रकाश शर्मा। तो एट दैट टाइम वो पढ़ रहे थे जब, तो वो अपनी थीसिस कंप्लीट कर रहे थे। पता नहीं कुछ प्रेशर आया, एट द लास्ट मोमेंट वो अपनी थीसिस कंप्लीट नहीं कर पाए। उस वक्त उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, प्रकाश। तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कहने में, डॉक्टर दिव्या प्रकाश। और जब मैंने डॉक्टरेट की आईआईटी रुड़की से, तो उस दिन उन्होंने मुझसे बोला कि अब मैं हमेशा के लिए डॉक्टर हो गया हूँ, जब भी तुम्हारा नाम आएगा तब मेरा नाम जरूर आएगा, डॉक्टर दिव्या प्रकाश। तो मतलब है, ये सही कह रही हो तुम कि कायनात लग जाती है। मेरे फादर ने चाहा कि वो डॉक्टर प्रकाश बने, और कहीं ना कहीं ऊपर वाला हेल्प करता है आपकी। मैम मुझे तो लगता है मेरे फादर का जो रेजिस्टेंस था ना, उसकी वजह से शायद मैंने ज्यादा ग्रो किया है, क्योंकि वो मुझे रेजिस्ट करते थे, मैं उनको अपोज करती थी, और उसमें मुझे लगता था कि मुझे तो करके दिखाना ही है। तो शायद हाँ, वो मेरे लिए और तो एक मूविंग पावर अदिति, थी हमेशा। तुम अग्रवाल हो, लेकिन कहीं ना हाँ, कहीं झांसी की रानी का है, जीन्स है तुम में। वो मुझे लगता है कई बार शायद पापा नोइंगली करते थे ये कि मैं इसको अपोज करूंगा तभी ये आगे जाएगी, अगर मैं शी विल डू। ऐसे करूंगा तो शायद पापा को बैक एंड में पता था कि मुझे इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो पापा की स्ट्रेटेजी भी थी। हाँ, कैसे हैंडल करना है उन्हें अपनी झांसी की रानी को। हाँ, उन्हें बच्चों को हैंडल करना आता है बहुत अच्छे से, तो उन्हें पता है कि मुझे कैसे इसे पुश करके इससे करवाना है। वाह, कैसे अच्छा करेगी, इसका बेस्ट कैसे आएगा। और जब बेस्ट कैसे। मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, और जब डायरेक्टर सर ने पापा को फोन करा कि आपकी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया है, इसने पूरी यूनिवर्सिटी टॉप की है, दैट डे आई फेल्ट कि हाँ पापा इज करेक्ट, जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने जो एग्जैक्टली। कहा और जो सिखाया वही काम आ रहा है मेरे, और वही उसी की वजह से मैं स्ट्रगल कर पा रही हूँ इतना। हम तीनों के डिस्कशन में कहीं ना कहीं बार बार निकल निकल के फादर वर्ड एक बार बार आ जा रहा है। तो आई यस, फील दैट कि कहीं ना कहीं आपके मदर तो आप एक गर्ल के साथ होती ही है, हमेशा होती है। मदर तो उसको मैम सपोर्ट करती ही है, उसके बिना तो करती गर्ल्स ही कुछ है। नहीं कर सकती है, हाँ, मदर्स आर शी सपोर्टिव। कांट स्टैंड इवन, मतलब खड़ी भी नहीं हो सकती उनके बिना तो। पर अगर उनको एम्पावर्ड होके दिखाना, सक्सेसफुल होके दिखाना है, तो फादर का साथ जरूर चाहिए। मदर का तो मैम बाय डिफॉल्ट मम्मी लोग कभी मना नहीं करती, हमेशा सपोर्ट करती हैं, और जितना मम्मी उनसे हमेशा बन सपोर्ट। पड़ता है उतना करती भी है। जो हाँ, कर सकती है, जैसे भी कर सकती है, अभी भी मेरी मम्मी आती है, खा लो पी लो, मतलब लगी रहती है मम्मी। I was thinking at the time when Arav and Abir was, I was expecting at the time कि बेटी हो तो मैं भी उसके साथ ऐसे ही खड़ी रहूं। मैम आई हैव आल्सो टू किड्स, बेटे ही है। सेम। Same. So now, Shweta, what are your views? Any message to the girls student of Shobhit University Um, from your um, side? Definitely. As I said in the very starting, well, we shouldn't be just focusing on girl students or women empowerment. So I think my message would be yes to the girl students, but I would say a message to all the students who are pursuing their graduation from Shubhit University and also beyond. The first thing you need to know is be kind to yourself. It nothing major is gonna happen if you're gonna be very harsh on yourself and just go out of your way to achieve things. Be kind. Take a pause. Learn about yourself. Right. That is what you need to do to be successful. If you're just continuously running, you're losing the essence of life. But when it comes down to empowerment, just make sure that you feed yourself with good thoughts. You have a belief system and believe in that strongly. Please do not say things like you are dumb or say you're lazy. Do you do that to your best friend? No. So treat you as your best friend. Say things that you can do, because empowering is a journey from cannot to I can. And what all goes between these two words is what is empowerment. Having everything in place, but still not having a can do attitude can result in no results. So breathe in, take a deep breath, be kind to yourself, have the courage, have the belief system, go get it. Do not ignore studies. Please, please do not ignore studies because you're still in studying. You have to graduate to go out and fight in the world for whatever you want to. But for Exactly. the women or say the girl students, I would want to quote what exactly, because I've been listening to Sadhguru for some time now. I'm not like totally a spiritual person, but always am open for good suggestions, good thought process,
and some good vibes to flow my way. As Sadhguru rightly said, he said, you know, be a woman and succeed like a woman, not like a man. Because in in this world, when a woman is trying to succeed, that is what we are calling empowering. When in today's world, women try to succeed like a man, then we are losing a sense of the life, the beauty of being a woman. And if we are doing that, we are defiling nature because we are women for a purpose on this planet, and men are for a purpose on this planet. If we try to have equality, we say we need equal, everything equal, we are defiling nature. But when we say equal opportunities, that is what the right thing to say. So do not fight for equal. So I would say just sit back, relax, study hard. Definitely, guys, if you're listening to me, please study hard, go achieve your goals, believe in yourself, have the courage to go and speak out. Always present your opinion because what you believe in will always be backed up by facts. And show yourself to the India. Whole Yeah. world, I know, not only the India. Yeah, so yeah, it's for every student, not just for girls. Actually, there are some comments, हाँ मैं ma'am. उन्हीं पे आ रही हूँ अभी अदिति there are some comments for you just a minute Bhadoria sir welcome both of you good initiatives and Thank you Dr. so Abhinav Srivastav good afternoon one and all Anil much. good afternoon Sneha is good afternoon everyone and Ashish Padhyay he want to ask how can empower the rural woman on their door. Is there any golden prospect with your aunt? Please suggest and share. Yeah, I would say it's a very interesting question, ma'am, because when we talk about empowerment, we are reaching out to the urban women who are in big cities. We make sure we have lots of posts on social media. We have connected through TV channels and through different platforms to make sure they are empowered and all. But very rightly said. So, as what I quoted earlier, everything starts from home, right? So as I was growing up, I had the right environment. So what we can do is we make sure that our system is built such that every family provides the right environment to both the genders. It has to be done at the ground level, circulated across the country, be via panchayats, where we have like lots of discussion, healthy discussions will help India grow. Or there are women meets like what we call Anganwadi, if I'm not wrong, where we have a lot of women gathering. We make sure that we are telling them that is what you need to pass it on to your next generation. Provide them opportunities, provide them with a belief system, groom them in such a way that they can go out and stand and face the difficulties of the world. So we need to start it at home when it comes to rural. But definitely, some programs, national level programs, would be good to be organized in these rural areas wherein we go and talk about what is happening on a wider world as opposed to they having their small belief system from the area that they are. We should have some programs launching in wherein women go and talk to other women and share their experiences for them too. So Yeah, a very beautiful question, and I think we must really work on that. yeah, या एक्चुअली बिकॉज देखो रूरल एरियाज में देयर इज अ प्रॉब्लम आई एग्री यहाँ पर विमेन को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है एंड इट्स टफ फॉर देम टू गो आउट ऑफ देयर हाउसेज इवन उनको पढ़ना तो बहुत मुश्किल है वो दे आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स एंड एवरीथिंग तो इट्स लाइक कि आशीष आई वुड से कि अगर हम में से सब लोग ये प्लेज कर लें कि ठीक है हम सिर्फ अपने सराउंडिंग्स में 5 women को ही हेल्प करेंगे तो आई थिंक तो ही Okay. सारा हो जाएगा आई थिंक इतने से ही good. हम लोग अगर इतना प्लेज कर लेंगे कि ठीक है एक जना 5 women को एम्पावर करेगा 5 women को हेल्प करेगा तो आई थिंक एवरीबडी वुड बी लाइक इन देयर गोल्डन डेज ऑल द वुमेन ये एम्पावरमेंट का वर्ड हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी Empower, Yeah. seriously. Exactly. एक्चुअली हमारे सिस्टम में होना चाहिए एज अपोज टू यस समथिंग
enforcing it. हमारी मेंटल बैरियर्स जो है वो ब्रेक होने चाहिए और हम सबको एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए टू ब्रेक दोस बैरियर्स। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट आके कुछ करेगी या ये करेगी, वो बहुत हाई लेवल की बातें हैं। हम अगर नीचे से स्टार्ट करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, आगे ग्रो कर पाएंगे। पहले लोगों की सोच बदले। यस, और वो हम ही बदल सकते हैं, वो हम ही सरकार बदल सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। वो क्या 4 घंटे करेंगे थोड़े से, वो तो बोल देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब चलता रहेगा, बट वो इम्प्लीमेंटेशन तो ग्राउंड लेवल पे ही होगा ना, उसके लिए लेवल पर जरूरी है, हमें ही करना पड़ेगा। I also think it is equally important कि हम मैसेज को भी स्प्रेड करें। मतलब जैसे मैम आपने एग्जांपल लिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट? अगर ये मैसेज कहीं सर्कुलेट ही नहीं होगा तो कोई उसके बारे में सोचेगा नहीं। So it has to be done in a big picture so that people are aware of this, वरना वो ग्राउंड लेवल तक जाएगा नहीं। हाँ श्वेता, राइट, वो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, दे आर डूइंग। जो ये उनके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सारा है, वो हाई लेवल पे दे आर स्प्रेडिंग इट, आंगनबाड़ी गांव सब जगह आ रहा है, बट वो उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं पर मुझे लगता है थोड़ा लैग कर रहा है। और वो हम ही करेंगे, वो हम लोकल जो जहाँ का है वो अपने आसपास के अगर सराउंडिंग्स को एम्पावर करेगा तो आई थिंक द टास्क इज डन। Absolutely. एक और क्वेश्चन है अभी कि व्हाट इज द रोल ऑफ NABARD, आई थिंक सो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन वुमेन एम्पावरमेंट? एक्चुअली जितना मुझे पता है इसके बारे में, दे प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री या फिर लेस इंटरेस्ट लोन्स टू वुमेन स्पेशली। जो भी ये बैंक्स हैं ये रूरल लेवल पे लोकल लेवल पे काम करते हैं, और यहाँ पर जो है लोकल क्राफ्ट्समैन को बहुत सपोर्ट करते हैं, लाइक वीवर्स हो गए आपके, जुलाहे हैं, है ना, जो लोकल सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम कर रही है लेडीज। तो इस तरह की जितनी भी लोकल आपके एक्टिविटीज हैं जो क्राफ्टमैन है गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बैंक बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं वुमेन्स को, सपोर्ट करते हैं कैपिटल देने में, इंटरेस्ट फ्री, थोड़ा बहुत गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इफ यू नीड दे हैव काउंसलर्स आल्सो समटाइम। तो आई थिंक यहाँ पर इनका ये रोल, मेन जो रोल है इनका, वो तो ऑब्वियसली दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये आपको फाइनेंसिंग और फंडिंग में हेल्प करते हैं, और स्पेशली टू द रूरल वुमेन। या Abhi Shakti Gupta, she wants to say it always pride moment to see the seniors and colleagues sitting on a such good position. Through this platform, I would like to suggest Shobhit University India to be more focused on incubation centers and center of excellence, and the proud alumni can help SU to make it a great grand success. Thanks to both of the seniors to share the view on such an important topic. Oh, thank you so much. Thank you, Abhishek. And Vishal Sani, if you believe in yourself, things are possible. पता है. Abhishakti ka ma'am शायद एक Abhishakti has a query also. Abhishakti is saying Shobhit University is not just empowering women, but university is really empowering nation, producing the successful alumni. No, this one. Good. And you can let a women-led incubation center and involve Atmanirbhar Bharat and help the female students and alumni to grow their startups through university. We have an example of Vanasthali Vidyapith running Atal incubation center supporting their alumni. Abhishakti, I have read your question and that is a very, very good idea which I like, क्योंकि अभी we have an alumni meet in February, University Alumni. Yeah. Divya was also there. So there we created a group for alumni जहाँ पर we are like organizing the things कि अब we are, हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि alumni का है, and there we can help the people and we are setting up the goals. तो obviously I will keep this in mind, और जो भी हमारे alumni हैं और जो हमारा group है, I will talk to them कि इसमें हम क्या कर सकते हैं. Next time obviously I'll get back to you कि हमने कुछ किया है. I will surely. मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका suggestion and we will work on this. Yeah, we will. And actually, just an update there. Myself and Aditi and Divya ma'am connected a few days ago as well, and we were thinking on similar lines to have an incubation center set up. So definitely this, again, your comment has added fuel to our thought process. So we'll definitely be working on those lines. Yeah, we will do work on that. Shobhit University India, we are proud of our proud alumni. And Aditi, there's a message for you, both of you.
सर का, शेखर सर का, चांसलर सर का ब्लेसिंग्स. Thank you, sir. You're privileged. Thank you so much. Exactly. Yeah, this is a achievement. Yeah. Like a father figure to me. शेखर सर की जो भी लर्निंग्स हैं, आई हैव स्पेंड मच टाइम विद शेखर सर. मैंने जितना भी टाइम उनके साथ स्पेंड किया है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. और एज एन एंटरप्रेनर मेरी जो जो उनसे लर्निंग है वही मेरे काम आती है एक्चुअली. मतलब Exactly. हाउ टू बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, हाउ टू डील विथ टफ सिचुएशंस एंड बीइंग वेरी काम. मतलब रिएक्ट ही नहीं करना है, बट यू कैन डील विद ऑल दोज थिंग्स. वो चीज़ मैंने शेखर सर में देखी है और वो मैंने उनसे ही सीखी है. तो वो मेरे बहुत काम आती है. मैं सर को भी कहती हूँ, सर आपसे वो मेरे उनकी हमेशा. और अदिति वो याद रखते हैं, ही नो बाय द नेम, मतलब उनको लर्न है, सबका नाम से याद करते हैं वो. उनको, और तभी भी वो इतना शांत रहते हैं. टफ से टफ सिचुएशन हो, पहाड़ गिर रहा होगा, कुछ आग लग गई होगी, लेकिन सर उसको डील कर रहे होंगे, बट इधर से उधर टस से मस उनका मतलब कभी भी टेम्पर लूज नहीं करते सर. हमेशा बहुत शांत रह के चीजों को डील करते हैं, चाहे कुछ भी होता है. सीखना है उनसे अभी हम लोगों को. यस मैम, वो उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी है ना कि मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ कि ये मैंने शेखर सर से सीखा है. हाँ, विद एवरी टाइम ही इज विद अ स्माइल. यस मैम. अ पीसफुल स्माइल. पीसफुल स्माइल, पेशेंस. इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे कॉलेजेस है मैम. बहुत मुश्किल है कि बंदा अपना टेम्पर मतलब मेंटेन करके रखे इतनी सारी चीजों के बीच में, बिकॉज ही हैज 100,000 थिंग्स टू डू. उसके बाद भी ही इज सो कूल एंड सो बैलेंस्ड. तो आई रियली, इट्स अ लर्निंग फॉर मी. Motivating role model. We can add up a lot of things for sir. यस मैम, मेरे लिए एक्चुअली रोल मॉडल है. एज एन एंटरप्रेन्योर तो मैं उनसे बहुत कुछ, जब भी मैं कुछ सोचती भी हूँ ना कि ये अरे यार, अच्छा शेखर सर होते तो वो कैसे कर रहे होते, जब कुछ बहुत ज्यादा कम सा फूट जाता है कंपनी में, तो शेखर सर होते तो कैसे कर रहे होते. अदिति, बहुत सारा है अभी. जैसे अभी शक्ति फिर बोली है कि आई वुड लव टू वॉलंटियर फॉर डिफरेंट अपकमिंग इन यूनिवर्सिटी एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ द एलुमनाई नेटवर्क. बिल्कुल, वी विल वर्क ऑन दैट. रियली थैंकफुल टू बी पार्ट ऑफ सच एन अमेजिंग सेशन. बहुत सारी ब्लेसिंग्स है तुम लोगों के लिए, और बहुत सारा तुम लोगों के लिए है थैंक्स. और ये बहुत अच्छा लोगों को लग रहा है. अभी कुछ और मैसेज अगर तुम दोनों को देना हो, श्वेता, अदिति. Ma'am, my message is always clear. Believe in yourself and do not get yourself into discriminating between men and women. Focus towards empowerment as a whole and be empowered. Bilkul. Aditi, now I would like to end up this session. And Shweta, thanks a lot, our proud alumnus Aditi and Shweta. I feel that today's meeting will give a lesson to the coming girls students. And personally, I feel that this discussion is a lesson not only for the women, but it is for the whole Indian society. And I pray that after watching this session, at least the way of thinking about women may change. And it is my request to every human being, आप अपने बेटों को साथ, अपनी बेटी को भी पढ़ाएं. आपका बेटा आपका घर तो बढ़ाएगा, पर आपकी बेटी 2 घर को बढ़ाएगी, अगर वो शादी करना चाहे तो, है ना. मेरा यहाँ लड़कियाँ, anybody from Shobhit University, I'm always available. आपको कभी भी मेरी हेल्प चाहिए for anything, anywhere, you can connect me on Facebook, you can connect me on LinkedIn, you can connect me on Google, anywhere. I'm always available for Shobhit University, for all the students, alumni, anyone जो इसको भी जब भी चाहिए. This is my message कि I'm there. On behalf of all Shobhit Parivar and your Shobhit family, I'm really thankful to you. Thank you. And with this, my words, now I'm going to stop my words. And I want to give one message to all of you, our proud alumni. We invite you all to share your experiences like the Aditi and the Shweta. We love to organize a discussion session with you all. Please contact me for this and keep in touch, please. Thank you. All the best, Aditi and Shweta. Thank you, ma'am. Next year, फिर तुम्हारे बहुत सारे add up करा के तुम्हारे सक्सेसफुल स्टोरीज खूब सारा लेके फिर हम मिलते हैं. Thank you so much for having us on this platform. Thank you.
I'm Thank you. privileged. All the Privileged best to with be you. here. Thank you, Yeah. everyone. Hi Thank you. everyone. Bye.